Today, Assalamu alaikum. Today our topic is stromal neoplasms. सबसे पहले हमें स्ट्रोमा का ब्रेस्ट के स्ट्रोमा का आइडिया होना चाहिए कि ब्रेस्ट के स्ट्रोमा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. The stroma of the breast consists of two components: the intralobular stroma and the interlobular stroma. Intralobular, that is within the lobules. These are the lobules of the breast ना. तो जो ग्रीन में टिश्यू दिखाया गया इट इज़ द इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा, और जो लोब्यूल्स के दरमियान दिखाया गया टिश्यू रेड के अंदर दिस इज़ द इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा. बेसिकली हम इन स्ट्रोमास के रिलेटेड जो ट्यूमर्स अराइज करते हैं इधर दे आर बेनाइन और दे आर मेलिग्नेंट, हम उनको डिस्कस करेंगे. अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ग्रीन के अंदर हमें यहाँ पे एक फाइब्रोएडेनोमा नज़र आ रहा है और एक फिलाइडस ट्यूमर नज़र आ रहा है. फिलोइडेस और फिलॉइड्स ट्यूमर. इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा के दो मेन ट्यूमर्स हैं, फाइब्रोएडेनोमा एंड फिलॉइड्स ट्यूमर. जो इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा है उसके अंदर हमारे पास हेमेंजियोमास आ जाते हैं, लाइपोमा विच आर बेसिकली बेनाइन ट्यूमर्स एंड एंजियोसार्कोमा विच इज़ बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. हम इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक पास पेपर्स के क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है. तो इसको हम उस तरह से पढ़ेंगे कि हमारी यूक्यूज़ MCQs वगैरह कवर हो जाए इसके अंदर और हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं. सबसे पहले अगर हम स्ट्रोमल न्यूरोप्लाज्म्स की बात करें तो उसके अंदर पहले डिस्कशन आ रही थी स्ट्रोमा की टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोमा इन द ब्रेस्ट, इंट्रालोब्यूलर एंड इंटरलोब्यूलर, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया. इंट्रालोब्यूलर विद इन द लोब्यूल्स एंड इंटरलोब्यूलर बिटवीन द लोब्यूल्स. So the intralobular stroma gives rise to fibroadenoma and phyllodes tumor. As I have shown in this diagram, this is fibroadenoma, the tumor of the benign tumor of the intralobular stroma, and this is phyllodes tumor. It is another fibroadenoma-like tumor of the intralobular stroma. अब इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. बेसिकली इट गिव राइज टू बाईफेजिक ट्यूमर्स. अब बाईफेजिक ट्यूमर से क्या मुराद आता है? बाईफेजिक ट्यूमर से मुराद वो ट्यूमर्स मुराद है इनके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट है और स्ट्रोमल कंपोनेंट है. अब एपिथेलियल कंपोनेंट के अंदर हमारी ल्यूमिनल सेल की लेयर आ जाती है, मायो एपिथेलियल सेल की लेयर आ जाती है और आउटर स्ट्रोमल सेल की लेयर आ जाती है. जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एपिथेलियल लेयर है, इसके अंदर उसके अंदर फर्दर दो लेयर्स आ जाती हैं, ल्यूमिनल लेयर और मायो एपिथेलियल लेयर, और उसके बाहर हमारे पास ये स्ट्रोमल टिश्यू है. अब जो बाईफेजिक ट्यूमर से मुराद ये है, वी से दैट इंट्रालोब्यूलर लीजन्स आर बेसिकली बाईफेजिक ट्यूमर. से मुराद ये है कि इसके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट भी आ रहा है और स्ट्रोमल कंपोनेंट भी आ रहा है. अब होता ही है कि जो स्ट्रोमल कंपोनेंट है उसकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है. उसमें स्पेसिफिकली अगर सेल्स की बात कीजिए फाइब्रोब्लास्ट की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से ये जो एपिथेलियल कंपोनेंट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से एपिथेलियल कंपोनेंट कंप्रेस हो जाता है और स्लिट लाइक एक्सटेंशंस बना देता है इस तरह से. अब नॉर्मली एसएनआई इस तरह के राउंड होते हैं. वी हैव राउंड एसएनआई इन नॉर्मल लॉब्यूल्स. दिस इज़ अ नॉर्मल लॉब्यूल. This is a normal lobule with a round SNI. In case of fibroadenoma, instead of these round lobules, we have these elongated slit-like structures. These elongated slit-like structures are due to compression by the stroma. Basically होता क्या है कि स्ट्रोमा की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से जो एसएनआई है वो कंप्रेस हो जाते हैं. एपिथेलियम बेसिकली कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से एसएनआई कंप्रेस हो जाती है एंड दे बिकम स्लिट लाइक. ये बेसिक इसके अंदर अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का. अब हम चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ. इसके टेक्स्ट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. सो दे आर बाईफेजिक ट्यूमर्स कंप्राइजिंग बोथ द एपिथेलियल एंड स्ट्रोमल सेल्स. प्रोलिफरेशन ऑफ इंट्रालोब्यूलर फाइब्रोब्लास्ट्स. अब यहाँ पे इंट्रालोब्यूलर फाइब्रोब्लास्ट से मुराद हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स हैं. इट पुशेस एंड डिस्टॉर्ट्स द एपिथेलियल सेल्स. जब इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो एपिथेलियल सेल्स को पुश करता है और डिस्टॉर्ट कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है, इलोंगेटेड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड रादर देन द राउंड एसएनआई. राउंड एसएनआई आर बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर्स. राउंड एसएनआई की जगह क्या आ जाती है, इलोंगेटेड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. नेक्स्ट, दीज आर बेसिकली द इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा के लीजन्स ना. इसके बाद आ जाते हैं इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा. इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा के लीजन्स मोनोफेजिक होती हैं. मोनोफेजिक से मुराद हमारे पास क्या है कि इसके अंदर सिर्फ मेसेनकाइमल कंपोनेंट, सिर्फ स्ट्रोमल कंपोनेंट आएगा. इसके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट नहीं है.
तो इस वजह से जो इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा है उसके लीजन्स या उसके ट्यूमर्स बाइफेजिक होते हैं, और इंटरलोब्यूलर लीजन्स या इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा की जो लीजन्स हैं वो मोनोफेजिक होती हैं। अब अगर मोनोफेजिक से बायोफेजिक से मुराद ये था, उसमें एपिथेलियल और स्ट्रोमल कंपोनेंट्स दोनों थे। मोनोफेजिक से मुराद ये कि उसके अंदर सिर्फ मेसेंकाइमल कंपोनेंट है। अब इसके अगर लीजन्स की बात की जाए तो इसके अंदर हेमेंजियोमा एंड लाइपोमा, दीज टू आर बिनाइन लीजन्स, एंड एंजियोसार्कोमा इज बेसिकली मैलिग्नेंट लीजन ऑफ इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा। अब साथ ही साथ मैंने बात की थी कि पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाऊंगी। दिस इज़ वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट्रोमल ट्यूमर्स। अब ब्रेस्ट्रोमल ट्यूमर्स के लिए पहले हमें ब्रेस्ट्रोमा का पता होना चाहिए। तो दो तरह के ब्रेस्ट्रोमा होते हैं। ब्रेस्ट्रोमल टिश्यू दो तरह का होता है, इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा एंड इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा। फिर उसके अंदर दो तरह के ट्यूमर्स भी आ जाएंगे, इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमल ट्यूमर्स और इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इंट्रालोब्यूलर जैसे कि मैंने डिस्कस किया फाइब्रोएडेनोमा एंड फिलॉइड्स ट्यूमर, और इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमल ट्यूमर्स में वी हैव मायोफाइब्रोब्लास्टोमा ड्यू टू मायोफाइब्रोब्लास्टोमा, लाइपोमास, हिमेंजियोमास, स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। जो दो तीन यहाँ पे चीज़ें मिसिंग है उसके अंदर हिमेंजियोमास आ जाते हैं और एंजियोसार्कोमा आ जाते हैं। तो प्लीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू है, फाइब्रोएडेनोमा एंड फिलॉइड्स ट्यूमर, ये दोनों पास पेपर में आ चुके हैं। इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी और इसके रिलेटेड पास क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वगैरह भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी। बेसिकली ये जो इसमें हाईलाइटेड ब्लू में ये बेसिकली पास पेपर्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस से रिलेटेड बज़ वर्ड्स हैं जो हमें सिनेरियोज को समझने में हेल्प करेंगे। तो फाइब्रोएडेनोमा की अगर मैं बात करूँ, प्लीज़ फाइब्रोएडेनोमा इस नाम से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर क्या बात क्या हो रही है इसके रिलेटेड। फाइब्रो मीन fibrous tissue, adenoma mean gland, so it is a tumor of fibrous tissue and gland. Keep it in mind that it is a benign tumor, and it is the most common benign neoplasm of the breast in females, obviously most common benign neoplasm of the breast, usually seen in the premenopausal women. अब इसके अंदर ये जो टाइमिंग है प्रीमेनोपॉजल वुमेन, इसको ये इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बज़वर्ड, क्योंकि जितने भी सिनेरियोज आएंगे उसके अंदर प्रीमेनोपॉजल वाली एज होगी, वो मैं आगे जाके जब यूक्यूज़ करवाऊँगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सिनेरियोज आएंगे उसके अंदर प्रीमेनोपॉजल एज 18 ईयर्स, 28 ईयर्स, 22 ईयर्स, इस तरह की एजेस एग्जामिनर्स ने मेंशन की होती हैं। तो प्रीमेनोपॉजल वेमेन, मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड प्रीमेनोपॉजल वुमेन। उसके बाद इसकी अगर थोड़ी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, I'll be explaining morphology in more detail, लेकिन यहाँ पे कुछ simple points. It is a well circumscribed mobile marble like mass. Mobile होने की वजह से इसको mouse in the breast या breast mouse भी कहा जाता है। Well circumscribed mobile and marble like mass. These are also very 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 important buzzwords. Both UQ scenarios के लिए important है, उसके अलावा जो MCQs है उसके लिए important है। उसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी पे। अब ये एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी, ये इसका ऐसा फीचर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है जो कि यूक्यूज़ को समझने में हमें हेल्प कर रहा होगा। अब चूँकि ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, तो जब भी एस्ट्रोजन सर्जेस होंगी, जब भी एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे, तब इसका साइज़ के अंदर डिफरेंस आएगा। इसका साइज़ यहाँ पे तो इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो इसका साइज़ भी कम हो जाएगा। यही वजह है कि जो फाइब्रोएडेनोमा है ये प्रेगनेंसी के दौरान ग्रो करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये पेनफुल हो जाता है, और आफ्टर मेनोपॉज ये श्रिंक हो जाता है। तो ये तीन इसकी फेजेस हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये ग्रो करेगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट बिकम पेनफुल, एंड आफ्टर मेनोपॉज इट रिग्रेसेस इन साइज। तो फाइब्रोएडेनोमा रिग्रेसेस इन साइज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके प्रेगनेंसी में ग्रोथ की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है, और कुछ सिनेरियोज़ में जो पास पेपर्स में आ चुके हैं यूक्यूज़ के अंदर ये भी बताया गया कि पहले ट्यूमर छोटा था, दैन द फीमेल बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है फॉर फाइब्रोएडेनोमा। उसके बाद हम इसके अंडरलाइन कॉजेज़ की बात करें तो उसके अंदर MDM12 जीन की म्यूटेशन आ जाती है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर MDM12 जीन की म्यूटेशन हो जाती है। इट कैन बी मल्टीपल और बायलैटरल, यानी कि एक ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फाइब्रोएडेनोमास हो सकते हैं, या दोनों ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं और दोनों में एक से ज़्यादा ट्यूमर हो सकते हैं।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ बिनाइन विद नो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं प्री मेनोपॉजल, देन वी हैव बिनाइन विद नो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, कुछ पॉइंट्स हैं विच विल हेल्प टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम phyllodes ट्यूमर। वो मैं जब वहाँ पहुँचूँगी तो मैं इनके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर दूँगी। देन वी हैव द Then we have the morphology. Morphology basically involves the expansile growth pattern. अब मैं वैसे इसकी images पहले एक दफ़ा दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी morphology डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये इसकी images हैं जिस पे हमें नज़र आ रहा है, it is well circumscribed mobile mass with greyish white glistening coverings with some slits on the surface. These are the basic hallmarks on the gross. These are the basic morphological features, gross features. So अगर past papers के लिहाज से थोड़ा डिस्कस किया जाए, जो क्योंकि पास पेपर्स हमने पढ़ने होते हैं एट द एंड ऑफ द डे ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स और व्हाट, तो मैं एक इमेज अगर एक वीडियो में ही डिस्कस हो जाए तो वेल एंड गुड, सब कुछ एक ही जगह पे सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत आसानी हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर हम fibroadenomas की बात करें, दे आर spherical nodules that are sharply circumscribed and freely movable. You can see here they are sharply circumscribed with borders, with well circumscribed borders. They have a size less than 1 centimeter to large tumors that can replace most of the breast. अच्छा, अगर कुछ बुक्स के अंदर ना इसके साइज़ का एक डिफ्रेंशिएशन है, डिफरेंट इसके साइज़ डिफरेंट लिखे गए हैं। जैसे कुछ जगह पे लिखा गया दे आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर्स ऑफन मेजरिंग 3 to 4 centimeter, रेयरली दे कैन ग्रो अप टू 10 centimeters in diameter. The cut surface bulges above the surrounding tissue. They are firm. They are basically firm, grayish white in color and glistening, and they have slits. You can see they have slits, slit-like space on the cut surfaces. So this is the basic. These are the basic gross features of the fibroadenoma. They have expansile growth pattern, pushing circumscribed borders, low cellularity, and mitosis are rare. Just keep in mind these two things. Low cellularity and mitosis are rare. These 2 points are the reasons that these tumors have negligible malignancy, or they have negligible tendency to be malignant. On the other hand, when we will be studying the phyllodes tumor, they are more cellular, they have more mitosis, so they have the tendency to become malignant. वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी जब मैं एक कंपैरिजन करूँगी बिटवीन fibroadenoma and phyllodes, तब हमें पता चल जाएगा that phyllodes is more cellular, they have more atypic mitosis, more risk of atypic mitosis basically. तो ये कुछ points हैं जो हमें अपने ज़हन में रखने हैं that phyllodes tumor, fibroadenoma has basically low cellularity and mitosis are rare. Now coming to the microscopic features. As far as the microscopic features are concerned, पहले इसकी डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे. These 3 diagrams are basically the fibroadenomas. We can see the slit-like SNI. अब होता क्या है basically, the fibrostoma grows like फाइब्रोस्टोमा की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. उसकी वजह से क्या है कि जो SNI हैं और जो लोब्यूल्स हैं वो कंप्रेस होकर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं. तो दीज आर द कंप्रेस्ड स्लिट लाइक ग्लैंडुलर स्पेसेस, लोब्यूल्स. ये भी इसी तरह की इमेज है जिसके अंदर स्लिट लाइक स्पेसेस बनी हुई हैं ड्यू टू एक्सेसिव फाइब्रस ग्रोथ. और अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो ये भी एक पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो डक्ट्स हैं, यहाँ पे जो लोब्यूल्स हैं उनकी कंप्रेशन नहीं हुई हुई. लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द डक्ट्स, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर डक्ट्स विच आर नॉट कंप्रेस्ड. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ तेज़ी से ताकि एक आइडिया हो जाए. अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एपिथेलियल एंड स्ट्रोमल कंपोनेंट. There is a mixture of epithelial and stromal component. The stromal component is usually predominant and usually contains the fibrous tissue. On the other hand, epithelial component basically contain ducts. These are ducts. Ducts lined by the double-layered epithelium, as we all know, the luminal epithelium and the myofibroblast. And the myofibroblast basically is these are 2 main components. अब इसके 2 आ जाते हैं हमारे पास आगे.
आगे से दो पैटर्न्स आ जाते हैं। एक पैटर्न है जिसके अंदर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और एक एक वो है जिसके अंदर डक्ट्स पेटेंट होती हैं। जिसके अंदर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं जिन फाइब्रोएडेनोमास के अंदर इस तरह से, दे आर कॉल्ड इंट्राकैनालिक्यूलर। इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स, जो दोनों डायग्राम्स है, दे हैव बेसिकली इंट्राकैनालिक्यूलर पैटर्न, दिस वन एंड दिस वन, in which due to excessive growth of the stroma there is compression of the ducts, while on other hand we have another pattern called the pericanalicular pattern, in which due to there is excessive growth of the stroma but the ducts are patent. This is called the pericanalicular pattern, the glandular structure and ducts which are not compressed. तो दो तरह के फाइब्रोएडेनोमा के पैटर्न्स आ जाते हैं हमारे पास। एक वो जिसके अंदर डक्ट्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, और दूसरे वो जिसके अंदर डक्ट्स कंप्रेस नहीं होती, दे स्टे पेटेंट। तो इस तरह से इन पैटर्न्स के नाम भी डिफरेंट है, इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न एंड पेरिकैनालिकुलर। Last but not the least, moving on to the contributing factors, it is one of the most important question of UQs or past papers, that what are the contributing factors of fibroadenomas। एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। That young newly married female, lactation, genetic predisposition, repeated exposure of X-rays and pregnancy. These are few contributing factors to फाइब्रोएडेनोमास। बेसिकली फाइब्रोएडेनोमास हर एज पे हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इसकी कॉमन एज है या फिर मोस्ट कॉमनली अक्रिंग एज है वो हमारे पास आ जाती है प्री मेनोपॉजल वीमेन में स्पेशली फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है। सॉरी, यंग न्यूली मैरिड फीमेल, लैक्टेशन के दौरान, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्स-रेज एंड प्रेगनेंसी, दीज आर सम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। इसके बाद हम यूक्यू पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि फाइब्रोएडेनोमा के रिलेटेड पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले जब भी आप पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन देखेंगे फाइब्रोएडेनोमा के रिलेटेड, तो उसमें जो एज आ रही होती है फीमेल की वो प्री मेनोपॉजल एज को देंगे, 24 ईयर्स, 28 ईयर्स, दीज आर 18 ईयर्स। ये मैंने एजेस बेसिकली पास्ट पेपर्स क्वेश्चन से ही उठाई हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि एजेस किस तरह से आ रही हैं, कोई सिनेरियो जो हमें आएगा वो किस तरह से आएगा। देन जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स या बज़वर्ड्स लिखे हुए होते हैं फाइब्रोएडेनोमा के रिलेटेड, वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। सॉलिटरी, डिस्क्रीट, रबरी, फ्री मूवेबल 2 सेंटीमीटर मैक्स। सॉलिटरी, डिस्क्रीट, रबरी, फ्रीली मूवेबल। Then change in size in the mass during her menstrual cycle. This is again a very important buzzword related to its nature, due to its estrogen sensitive nature. As we know, fibroadenomas are estrogen sensitive, so we can expect such change in size during menstrual cycle. Then it is again solitary, discrete, movable mass in the right breast which enlarges in the late menstrual cycle. Then again the point related to the estrogen sensitivity. And last, lump in the right breast for past 1 year. Like, listen to it carefully. For past 1 year she gave a history of childbirth. 4 months back the lump has increased in size since then. Like, she has a lump for 1 year, 4 months back she has a childbirth, उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ अगेन अ बज़वर्ड, सो अगेन रिलेटेड टू एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी। That's all about adenofibroma. Then we That's all about fibroadenoma. Sorry. Then we will be discussing phyllodes tumor. Phyllodes tumor basically it's fibroadenoma-like tumor with overgrowth of the fibrous component. अब इसमें होता क्या है कि ये फाइब्रोएडेनोमा की तरह का ही होता है, लेकिन इसके अंदर फाइब्रस कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। एग्जैजरेशन की वजह से क्या होता है कि इस तरह से ना इसके अंदर लीफ लाइक पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। यू कैन सी हियर there is excessive stromal growth, there is excessive fibrous growth in this tumor. So it is fibroadenoma like tumor but with overgrowth of the fibrous component with characteristic leaf like projections seen on the biopsy. Here in this image you can see the leaf like projections of the fibroadenoma the leaf like projection of the fibrous tissue which is impinging on basically the epithelium and pushing the epithelium into the dilated spaces or the dilated ducts. So
coming to the morphology, the stromal cells, or you can say the fibrous tissue, the stromal cells, they tend to outgrow the epithelial cells, resulting in bulbous nodules of the proliferating stromal cells. Here we can see the bulging nodules. These are basically these. Here we can appreciate the bulging nodules. Here we can clearly appreciate these are 1, 2, 3 bulging nodules. Here is again a bulging nodule. These are basically the bulging nodules of the proliferating stromal cells, which are covered with the epithelium. These are the bulging nodules of the proliferating stromal cells, which are covered with epithelium. So the protrusions can extend into the cystic spaces. These protrusions can extend into the cystic spaces, and they form phyllodes. Phyllodes is basically a Greek word for the leaf-like growth pattern. Here we can see the leaf-like growth pattern. The outgrowths are basically the fronds of the leaves, so it is called a leaf-like growth pattern. In high-grade phyllodes, tumor epithelium may be scant or absent, producing a sarcomatous appearance. I'll be explaining the high-grade and low-grade phyllodes tumor in classification a bit later. A bit later. Okay, then I'll be making a comparison between adenocarcinoma, between fibroadenoma and the phyllodes tumor. Here in phyllodes tumor, we have 2% of phylloid tumors which metastasize to distant sites. This is the point where it is differentiating from the fibroadenoma. फाइब्रोएडेनोमा के अंदर मेटास्टेसिस का या मेलिग्नेंसी का रिस्क जो था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, लेकिन इसके अंदर मेलिग्नेंसी हो रही होती है. इनकी 2% केसेस में इट कैन बी मेलिग्नेंट इन सम केसेस. बेसिकली 2% केसेस में ये मेलिग्नेंट हो सकता है. उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है फाइब्रोएडेनोमा से, वो एज का डिफरेंस है. जो फिलॉइड्स ट्यूमर है उसके अंदर बेसिकली जो फीमेल की एज होगी वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन वाली होगी, और इनकी 45 एज आ रही होगी, 50s में आ रही होगी, या आफ्टर 50s वाली एज होगी. तो इस तरह से ये अभी तक 3 मेन डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं कि इट इज़ अ फाइब्रोएडेनोमा लाइक ट्यूमर, बट लेकिन इसके अंदर फाइब्रस कंपोनेंट की ओवर ग्रोथ हुई हुई है, जिसकी वजह से लीफ लाइक पैटर्न बन रहा होता है. उसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेलिग्नेंसी, एंड थर्ड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन बेसिकली द एज. द फाइब्रोएडेनोमा बेसिकली presents in the females with the premenopausal age, and phyllodes tumor basically presents in the postmenopausal women. So these are basically diagrams which are shown, and this is the basically diagram which is showing the leaf-like growth of the stromal tissue and which is covered with the epithelium. Again, here we have a diagram with the leaf-like or the leaf-like pattern of growth of the stromal tissue, the fibroblast and stroma growing in a leaf-like pattern. Here we have the epithelial cells and we have large ducts. So if I come to the morphology of this tumor, so on microscopic level we can see that it is basically exaggerated intracanalicular growth pattern with leaf-like projections into dilated lumens. Here we can see an exaggerated intracanalicular patterns. This is an exaggerated intracanalicular pattern. बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रोमल टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से जो डक्ट्स होती हैं वो कंप्रेस हुई होती हैं. इनकी पेटेंट इसमें डक्ट्स नहीं होंगी, डक्ट्स पेटेंट नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर ल्यूमेंस जो है, ल्यूमेंस डायलेट हुई होती है इस तरह से. तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे माइक्रोस्कोपिकली. इट हैज़ एन एग्जैजरेटेड इंट्राकैनालिक्यूलर ग्रोथ पैटर्न. इसका जो पैटर्न है, वहाँ पे हमारे पास फाइब्रोएडेनोमा में 2 तरह के पैटर्न थे, इंट्राकैनालिक्यूलर एंड पेरिकैनालिक्यूलर. यहाँ पे हमारे पास लेकिन फिलॉइड्स ट्यूमर में हमारे पास एग्जैजरेटेड इंट्राकैनालिक्यूलर ग्रोथ पैटर्न आता है विद लीफ लाइक प्रोजेक्शंस इनटू द डायलेटेड ल्यूमन. उसके बाद हम आ जाते हैं एक दफ़ा इसके दैट फिलॉइड्स ट्यूमर. अगर माइक्रोस्कोपिकली हम लोग बात करें, इसकी मेलिग्नेंसी वाले पॉइंट को भी हम मद्देनज़र रखते हुए इसके माइक्रोस्कोपी को देखें, तो फिलॉइड्स ट्यूमर आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मोर कॉमन फाइब्रोएडेनोमास ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेलुलैरिटी. मैंने अब वही पॉइंट्स जो मैंने वहाँ बताया था कि फाइब्रोएडेनोमा में जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, सेलुलैरिटी वाले पॉइंट के द फाइब्रोएडेनोमास दे हैव लो सेलुलैरिटी ऑन द कंपैरिजन फिलॉइड्स ट्यूमर हैज़ मोर सेलुलैरिटी. Mitotic rate, phyllodes tumor has greater mitotic rate as compared to fibroadenomas.
nuclear polymorphism. In fibroadenomas, there is lower or basically negligible nuclear polymorphism, whereas phyllodes tumor there is increased risk of nuclear polymorphism. They have stromal overgrowth, and phyllodes tumor have stromal overgrowth with infiltrative borders. These are some points which distinguish phyllodes tumor from fibroadenoma, and these are some points which are basically lead the phylloid tumor toward malignancy. Then on the basis of their structure or the stromal growth, or on the basis of the appearance of the stromal component, we have two types, major two types: the phylloid low grade tumor and the high grade tumors. In low grade tumors are basically they have benign appearance, they resemble more to their parent cells. On the other hand, the high grade tumors, they have cells with low differentiation, so they have more like a sarcomatous appearance, like a rhabdomyosarcoma or liposarcoma, as I have discussed previously in this line, that in high grade phyllodes tumor, we have what we have sarcomatous appearance. In high grade phyllodes tumors, epithelium may be scant or absent, producing a sarcomatous appearance. यहाँ पे sarcoma वाली appearance आ रही है इस तरह से. तो low grade tumors basically benign होते हैं, they resemble fibroadenomas but they are a bit more cellular and contain mitotic figures. High grade tumors, as we know, they are malignant. They have risk of metastasis to other tissues, and they have more sarcomatous appearance. So that's all for phyllodes tumor. लेकिन लास्ट में हम यूके एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पास पेपर में अगर आया हुआ तो किस तरह से आया हुआ है. सबसे पहले हम एज की तरफ जाएंगे. अ 45-year-old फीमेल, एज से हमें ज़्यादा हो जाना चाहिए कि ये कोई पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन की बात हो रही है या फिर पोस्ट इनकी मेनोपॉज के करीब करीब कोई कंडीशन है. Presents in the breast clinic with a lump in the left breast. On examination, there is this size, well circumscribed, slightly mobile, non-tender mass in the left breast with no overlying skin changes, no fixity to the underlying tissue. यहाँ तक तो हमें पढ़ते हुए लग रहा था जैसे फाइब्रोएडेनोमा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पहला फीचर जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो एज है. आगे माइक्रोस्कोपिक देखते हैं. In microscopy there are leaf-like structures. This is the main buzzword here which will describe that our diagnosis here will be the phyllodes tumor. Leaf-like structures extending into the cystic spaces with extensive stromal proliferation. These are basically the buzzwords leading us to the diagnosis. Leaf-like structures extending into the cystic spaces with excessive stromal proliferation. As I've explained in microscopy, we can see that the phyllodes tumor are basically उनकी जो मैंने microscopic appearance बताई है वो basically क्या है, that we have we have bulbous nodules of proliferating stromal cells that are covered by epithelium. The protrusions can extend into the cystic spaces, and we have leaf-like growth pattern. These are the basic buzzwords जो कि हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे. इसके अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी भी आ रही है. नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, जो कि बेसिकली क्वेश्चन में आ रहा होता है. इसकी माइक्रोस्कोपी पूछी हुई होती है उन्होंने, उसके अलावा डायग्नोसिस पूछा हुआ होता है. दैट इट फॉर these lesions, these stromal neoplasms.